होगा. So he's saying you showed me what not to do, but he gets the drift of what I want to do. It just happens. I mean, with Bachna scene also, with Ranbir, a lot of scenes are there that remind me that he actually copied me a lot, which is very funny. Ranbir listened to me, Shah Rukh didn't. और मतलब एक्ट्रेसेस जो होती हैं, फीमेल लीड्स जो होती हैं, उनकी भी आप एक्टिंग करके दिखाते हैं? हाँ. कैसे? हाँ, कभी कभी हो जाता है. अभी एक्चुअली मैं 4 दिन पहले दीपिका के साथ शूट कर रहा था फाइटर पे, एंड इट वाज एन इमोशनल सीन, और आई गॉट इनटू दैट इमोशन ऑफ हाउ शी शुड डू इट, and I didn't realize I started acting it. And she burst out laughing. So I was like getting angry. It's an emotional scene. तू हंस क्यों रही है? Because she said you acted this, you don't do this. And I actually became that performer. So I get carried away sometimes. You have to control. तो और वो जो अगर आपके बताने के बाद सीन बेहतर बन के आता है एक्ट करने के बाद? हमेशा. They don't get it, but they'll get it at some point that डायरेक्टर ही हमेशा सुना करो. एक सवाल जो आपसे बार बार पूछा गया कि आपने ये आप कह रहे हैं कि आप लिखते हैं तो बीच में एंटरटेनमेंट डाल देते हैं. अभी पठान का क्लाइमैक्स सीन की बार बार बात होती है. अच्छा, वो सलमान और शाहरुख वाला. सलमान और शाहरुख वाला. हाँ जी. तो वो कैसे आपने विजुलाइज किया? पहले ही डिसाइड कर लिया था ऐसा होगा? उन्होंने कैसे माना? वो एक्चुअली एक सीन था जो टीम डिस्कशन में एक्चुअली जब एक छोटा सा एनेक्डोट है इसमें. जब हम सलमान को ला रहे थे पठान में और एक्शन सीक्वेंस था, जो मेरी क्लैरिटी थी कि ये एक जस्ट सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं होगा, इसमें मुझे ह्यूमर चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक डायरेक्टर के लिए इट कैन गेट वेरी टेम्पटिंग दैट यू हैव शाहरुख एंड सलमान इन अ सीक्वेंस, एंड सलमान कमिंग विद बीइंग एन आइकॉनिक कैरेक्टर लाइक टाइगर, make it really hardcore and make it an action oriented high action sequence, but I wanted to break it. I wanted it to be funny. I wanted, because आपको पता है ये लोग वो गुंडों को मार देंगे. You already prepared. आज कैसे मारेंगे दिखाओ. But X factor is the humor, and I think Shah Rukh and Salman both have such great chemistry with each other. They are very good friends. They have good understanding. And they are like that off camera also. So I wanted to capture that. And I was very clear, ये funny होगा. So when he comes, you have Salman landing with a drink. And he tells me, तो coffee shop पे रुका था. हाँ, pharmacy पे भी. ये ले painkiller. So we wanted that kind of a tongue in cheek. So starting में we established that. So we wanted to end also with humor, that sequence. तो ये sequence जो आप देख रहे हैं, जो post credit में है, वो actually उस sequence के end में था. They ended with that, कि जब आते हैं ऊपर चढ़ के, जब ट्रेन गिर जाती है तो थक के बैठ जाते हैं, बहुत थके हुए हैं और पीठ स्ट्रेच कर रहे हैं और बोले यार थक गए यार, अब नहीं होता. तो इट वाज रिटन फॉर दैट पार्ट एंड टू ब्रिंग सम ह्यूमर, एंड इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रगल टू फाइंड ये सीन का टोन क्या होगा. सो देन वी केम अप विद द आइडिया दैट मेक इट अबाउट देम इन रियल लाइफ, एंड वहाँ पर एक थोड़ा कॉमेडी आ जाएगी. सो दे स्पोक अबाउट दैट, बट वो फिर हमने सीन फिल्म से काट दिया. अच्छा, काट दिया. एंड वो फिल्म में नहीं था. इट एंडेड हाउ दैट सीक्वेंस इज एंडिंग, एंड द फिल्म एंडेड. एंड व्हेन वी सॉ द फिल्म फाइनल मिक्स के बाद, उदय चोपड़ा केम विद दिस आइडिया, यार वी शुड पुट दैट सीन एट द एंड ऑफ द फिल्म. एंड वी ऑल रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, व्हाई डिडंट वी थिंक ऑफ इट? इट्स माइंड ब्लोइंग. So it just became iconic after that. So credit to Uday Chopra for that suggestion. और वो करण अर्जुन वाला रेफरेंस कैसे आया? हाँ, वो एक बहुत फनी चीज़ है. वो अर्जुन भाग को इनकॉर्पोरेट करना था. सो अगेन आइकॉनिक चीज़ें हैं. सो वी वांटेड टू प्ले टू द गैलरी फ्रंट फुटेड, एंड सो आई मेड हिम शाउट भाग पठान भाग. एंड थोड़ा शायद हैं सलमान, बट उनको पुश करके करवाया मैंने. आप जब ये फिल्म्स देखने जाते हैं अपनी थिएटर्स में? हर पिक्चर मैं जाता हूँ. गेटी बैंड्रा में एक थिएटर है, 12 बजे का शो होता है, एंड मैं जाता हूँ हमेशा और पूरी पिक्चर देखता हूँ. इस बार मैंने कुछ आधा ही घंटा देखा और फिर मैं निकल गया, क्योंकि इस बार एक गलती हो गई. लोग मुझे पहचानना लग गए, एंड अभी और पहचानेंगे मेरे को और तकलीफ होगी. तो आई ट्राई टू स्टे अवे. आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया फॉर दिस रीजन. आई लाइक माई एनोनिमिटी. बट एक्टर्स तो बुर्का पहन के चले जाते हैं. हाँ जी, एक्टर्स कहानी सुनाते हैं कि वो बुर्का पहन के चले जाते हैं. हाँ, अभी मुझे भी वही करना पड़ेगा लग रहा है. बट मैं आधे घंटे के बाद निकल गया. आई कुडंट सी द होल फिल्म. एंड पठान एक्चुअली द फिल्म आई देन सॉ ऑन सोशल मीडिया, क्या रिएक्शंस थे. अब मैं देखना चाहता था लोगों को डांस करते हुए झूमे जो पठान पे, बट
अनफॉर्चुनेटली मैं गया ही नहीं देखने के लिए तो झूमे जो पठान का डांस भी आपने करके दिखाया था कि ऐसे करना है? उसकी भी बहुत कहानियां हैं। वो डांस स्टेप अभी जो आइकॉनिक हो गया है, काफ़ी मेहनत लगी और हम एंड वी वर फाइंडिंग दैट स्टेप टिल वन डे बिफोर द शूट इन स्पेन। तो बहुत बहुत ड्रामे हैं इस फिल्म में एंड इवेंचुअली आई थिंक ये किस्मत है इस पिक्चर की कि सब कुछ अलाइन होना था फॉर इट टू बिकम व्हाट इट डिड, वरना तो कुछ और ही हो रहा था। आपकी बातों से लग रहा है कि शूटिंग के टाइम ही पिक्चर बनती है, पहले कोई तैयारी वैयारी नहीं होती क्या? ऐसा लग रहा है क्या? But नहीं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत प्रेप होता है। ये इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं। क्या होता है फिल्म मेकिंग, क्या होती है कि आपने एक पिक्चर लिख ली और अपने दिमाग में सोच लिया कि ये ऐसे बनेगी, बट व्हेन आई गेट डाउन टू शूटिंग इट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर पैराफेर्नालिया दैट कम्स इनटू प्ले, वेदर कम्स इनटू प्ले, परमिशंस होती हैं, एक्टर की एबिलिटी होती है, स्टंट की एबिलिटी होती है, सेफ्टी होती है। यार ये एक्टर पे ये कॉमेडी जच रही है नहीं जच रही है, आपने तो लिख लिया फनी है, जब एक्टर बोल रहा है इट हैज नो इम्पैक्ट, it falls flat. You need to improvise over there and come up with something. So it is all about improvisation, yes, on the day. तो दूसरों की फिल्म देख के लगता है कि अरे ये वाली फिल्म ऐसे बननी चाहिए थी? I think that becomes very self obsessive, that you know I'm the maker and मैं जानता हूँ पिक्चरें कैसे बनती हैं। अब अपनी पिक्चर संभाल लो, बहुत बड़ी बात है यार, अपनी लाइफ संभाल लो। तो आप इवेंचुअली किस तरह के मेकर बनना चाहते हैं? क्योंकि आपने जिस तरह की फिल्म से स्टार्ट किया, सलाम नमस्ते वगैरह, अनजाना अनजानी, वैसी फिल्में तो अब आप नहीं बना रहे हैं। अब तो आप ये स्पाई यूनिवर्स और ये एक्शन में चले गए हैं। मेरी नेक्स्ट फिल्म है फाइटर, विच इज़ लाइक सेट इन द इंडियन एयरफोर्स। दीपिका, ऋतिक, अनिल कपूर हैं इसमें, एंड इट्स डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉर एंड पठान एंड बैंग बैंग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ टू डू डिफरेंट थिंग्स बट गिव द ऑडियंस एक थोड़ा एक्सपीरियंस जब थिएटर में जाएंगे, कुछ नया देखा, एंटरटेन हुए, गाने हैं अच्छे, ड्रामा है, विलन है, हीरो है। आप अगर एंटरटेन होने जा रहे हो थिएटर में तो मेरी पिक्चरें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी लगेंगी। अगर आप एडुकेट होने जा रहे हो तो मेरे पिक्चरों में मत आना, मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा आपको। चलिए, आखिरी सवाल, ये स्पाई यूनिवर्स पर बहुत बात हो रही है, ऐसा भी होगा फिल्म आएगी जिसमें सलमान खान भी होंगे टाइगर वाले, और शाहरुख खान भी होंगे, और ऋतिक रोशन भी होंगे, और जॉन अब्राहम भी होंगे, और भी लोग होंगे, क्यों नहीं। आई थिंक स्पाई यूनिवर्स है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्स है, बन रहा है यशराज का, एंड उनके प्लान्स हैं काफ़ी बड़े, और भी एक्टर्स हो सकते हैं स्पाई यूनिवर्स में, और फिर इवेंचुअली सब साथ में आएंगे। आई मीन होपफुली सबके खिलौने विलौने भी मिलेंगे, वो सब जो आजकल हो गया है, मर्चेंडाइज। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम बिजनेस है, लेट अस आल्सो मेक सम मनी यार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। सेवियर कह दें अब आपको? बोल दीजिए। Savior of Hindi cinema, Siddhart Anand. Thank you very so much. much. Thank you. Thank you. Thank you, Siddhart. Thank you, Kishore. And Siddhart, hopefully we will see Pathan and Tiger reuniting on screen very soon. I'm trying to see that, by the way. I'm going to request Kishore to present a memento to Siddhart as a token of our appreciation. Incidentally, Siddhart, we also had Shilpa Rao earlier in the day, the voice of Besharam Rang. So I think it's a Pathan day here at the Rising India Summit. Thank you very much, Siddhart. Thank you, Kishore, for that fascinating session. Well, we've spoken about cinema, and when we speak about cinema, social media can't be far behind. How many of you in this room use Twitter? That's all. Okay, how many of you are on Instagram? How many of you consume YouTube every day? It can be any video. Okay? And how many of you still use Facebook? That's quite a significant number. How many of you on LinkedIn? Okay, that's actually a majority. So I think a lot of professionals in the house. Well, all of you are going to find the next session very, very interesting and fascinating, because my colleague Sonal has assembled many people who have made their fame and fortunes on some of these social media platforms. So I'm going to invite Sonal on stage to take us through our next session. All right, thanks for that, Chandra. So it's time to pump up the energy a little bit, okay? It's time to show some enthusiasm, because the folks coming on stage have oodles of them.
right? We're talking about Rising India, and when talking about Rising India, how can we not discuss the biggest rising trend in India today? You know, there was a time when you would ask a kid around, what do you want to become? When you grow up, they would probably say doctor, engineer, teacher. Now, if you go around asking a kid, what do you want to become? They'll probably say, I want to go viral. I want to be on the gram. I want to be on YouTube. I basically want to do stuff that gets noticed. If not that, and I'm talking to older folks like you, if I can say that. And what is the first thing you do when you wake up in the morning? Now, I would love to hear somebody say, I kiss my dog, and I do some other stuff. But the fact of the matter is, we're all on our phones all the time. In fact, statistically speaking, about 71% people end up looking at their phone in the first 10 minutes when they wake up. So facts and figures aside, think about, when was the last time you bought something looking at an advertisement? The reality of our times is that what we eat, where we go, what we wear, what we do, is all getting influenced by these breed of young, enthusiastic creators who've got so much to offer. It's not just influencing in India today, is not at that phase where you cringe at, ye mera coupon code use karke discount lena, right? Influencing is at that stage where when Deepika Padukone has to launch a brand, she has to invite a bunch of influencers for a preview. We're at that stage where influencers are going mainstream. They are featuring in movies, OTT platforms, launching their own music channels. So clearly, it's time where we take them more seriously. We give them more respect for what they've been doing, but also understand from them how much of fun really goes behind creating these really funny, real content. So please, enough of me talking about and setting the context. Just give us your best applause for one of the finest creators in the country. I'm going to start by welcoming on stage Yashraj Mukhate.